Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvachakacharya Astatara Sata Shishi Mad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Nantikoti Vaishnavrinda Ki Namachara Shila Haridas Thakur Ki Prem Sukaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasri Gaur Bhaktavrinda Ki Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mathura Dham Ki Shri Dwarka Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri
Mayapur Dham, Navadvip Dham Ki, Sri Jagannath Puri Dham Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakta Devi Ki, Samaveda Bhakta Vrinda Ki, His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki, Srila Prabhupada Ki, Srila Prabhupada Ki, Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shri Guru and Gauranga. Hari Hari. Namo Vishnu Padaya Krishna Sai Badle Shmad Bhaktivedanta Swami. Say so Swami Gauravam Chani Srivani Pachasa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritam naram chaiva narotamam devam saraswatim vyasam tuto jayam udirajet nasta presa bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatu tamashloke bhaktir bhavati naishtaki. So, reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 10th chapter, text 13. Asata Shri Mandandasya Daridriyam Param Anjanam Atmapamyena Bhutani Daridra Param Ikshate Asata Shri Madandasya Daridriyam Param Anjanam Atmaupamyena Bhutani Daridra Param Ikshate Asata Shri Madandasya Daridriyam Param Angyam Atmapamyena Bhutani Daridra Param Ikshate. Ujjain. Asadasya Daridriyam Param Daridriyam Asata Shri Madandasya Daridra Paramikshate Asata Shri Madandasya Daridra Paramandana Daridra Paramamikshate Asata Shri Madandasya Daridrayam Paramanjanam Atmapanyena Bhutani Daridra Paramikshate. Matajis.
Asata Srimadandasya Haritam Danam Admapamyena Bhutani Daridra Pranamikshate Asata of such a foolish rascal. You're going to say it in English? Okay. That word was in reference to me. Srimad Andasya, who is blinded by temporarily possessing riches and opulence. Daridriyam, poverty. Param, Anjanam, the best ointment for the eyes. By which to see things as they are. Atma aupamyena, with comparison to himself. Bhutani, living beings. Daridra, a poverty-stricken man. Param, perfectly. Ikshate, can see things as they are. Translation. Atheistic fools and rascals. Abhajananti mamudha. Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to poverty is the proper ointment for their eyes, so they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own. नास्तिक मूर्ख तथा धन की बल के कारण वस्तु को यथार्थ में नहीं देख पाते। अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम कार्य है, जिससे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतएव वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Even today, if a man who was formerly poverty-stricken gets money, he is inclined to utilize his money to perform many philanthropic activities like opening schools for uneducated men and hospitals for the diseased. In this connection, there is an instructive story called Punarmushtaka Bhava. Again, become a mouse. A mouse was very much harassed by a cat, and therefore the mouse approached a saintly person to request to become a cat. When the mouse became a cat, he was harassed by a dog. And when he became a dog, he was harassed by a tiger. But when he became a tiger, he stared at the saintly person. And when the saintly person asked him, "What do you want?" the tiger said, "I want to eat you." Then the saintly person cursed him, saying, "May you again become a mouse." Punarmushtaka Bhava. A similar thing is going on all over the universe. One is going up and down, sometimes becoming a mouse, and sometimes a tiger, and so on. आज भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे, अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्यों में
यथा अशिक्षितों के लिए स्कूल खोलने तथा रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते हैं। इस संबंध में एक शिक्षा प्रदत्ता है जो पुनर्मुषिको भव, फिर से चूहा बन जाओ नाम से प्रसिद्ध है। एक चूहा बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था, अतः वह एक साधु के पास पहुंचा कि उसे बिल्ली बना दे। जब चूहा बिल्ली बन गया तो उसे कुत्ता सताने लगा, और जब कुत्ता बन गया तो शेर सताने लगा। किंतु जब वह शेर बन गया तो उसने साधु की ओर घूरने लगा, और जब साधु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उस शेर ने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो साधु ने उसे शाप दिया, तुम फिर से चूहा बन जाओ। ऐसी बातें सारे विश्व में चल रही हैं। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी चूहा बनता है तो कभी शेर। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Pasade Poye Bhakti Lata Bija. The living entities are promoted and degraded by the laws of nature. But if one is very, very fortunate by association with saintly persons, he gets the seed of devotional service, and his life becomes successful. Narada Muni wanted to bring Nalakuvera and Manigriva to the platform of devotional service through poverty, and thus he cursed them. Such is the mercy of a Vaishnava. Unless one is brought to the Vaishnava platform, one cannot be a good man. Harav abhaktasya kuto mahadguna, Bhagavatam 5:18-12. An Avaishnava never becomes a good man, however severely he is punished. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड धनते को न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादी पाए भक्ति लगा। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु की संगति में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नरकुवर तथा मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें शाप किया। वैष्णवों की कृपा ऐसी ही होती है। वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य एक नहीं बन सकता। हरावो भक्तस्य कुतो महत्वपूर्ण, भागवतम 5:18। किंतु अवैष्णव को कितना ही दंड क्यों न दिया जाए, वह कभी नहीं बन सकता। Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to poverty is the proper ointment for their eyes, so they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own. Hare Krishna. Radha Madan Mohan Ki. Come on. Krishna Vishnu Om Jnana Timarandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvisesha Sunyavadi Paschachati Satarne. So this verse is demonstrating the mind of the pure devotee. तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के मन में क्या होता है उसको उजागर किया गया है। The pure devotee is not interested in
Dhanam Janam Nas or Sundarim. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको धर्म जन्म सुंदरी से कोई मतलब नहीं होता. They are simply interested in pleasing Krishna. वे सिर्फ कृष्ण को तुष्टि करने में ही रुचि रखते हैं. One time Srila Prabhupada was on a morning walk and he asked a devotee, what does Krishna want the most? तो एक बार श्री प्रभुपाद प्रातः भ्रमण में थे और उन्होंने भक्तों से पूछा कि भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है. And this one sannyasi said, Krishna wants that every living entity goes back home, back to Godhead. तो एक सन्यासी ने कहा कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हर एक जीव वापस भगवत धाम चला जाए. Srila Prabhupada said, thank you very much. श्री प्रभुपाद ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद. That's the mindset of the pure devotee. तो यह एक शुद्ध भक्त की मानसिक धारणा है. In this world, you go out in the streets, Ujjain, Indore, Mumbai, Kolkata, Delhi, New York, Germany, London, it doesn't matter. 99% of the people are just interested in their own aggrandizement. तो आप इस पूरी दुनिया में कहीं भी उज्जैन, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, जर्मनी कहीं भी चले जाएं तो आप कहेंगे कि 99% लोग सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे हैं. But the pure devotee is not thinking like that. They're not thinking like that at all. लेकिन शुद्ध भक्त इसमें नहीं लगे. They are just simply thinking, how can I give this Krishna consciousness to every conditioned soul? वे सिर्फ यही विचार करते हैं कि कैसे प्रत्येक भक्त जीव को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जाए. One time, one of my godbrothers, he was in Australia, and he was a temple president, and they arranged for a big car, a limousine for Srila Prabhupada to get picked up at the airport. तो एक बार मेरे गुरु भाई ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने श्री प्रभुपाद को पिकअप करने के लिए बहुत बढ़िया राजशाही कार लिमोजीन दिया. And he said, in my mind, I was thinking, I really have it made. और वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा मन में लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है. I'm here with a pure devotee of Krishna, and I'm driving in a big car, and as they were driving, she could look at the faces of all these conditioned souls peering into the car. तो वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे एक शुद्ध भक्त के साथ हूँ, एक बढ़िया कार चला रहा हूँ, और वो देख सकते थे कि कैसे जो सारे लोग हैं भौतिकता वाले लोग वो कैसे उस कार की तरफ आंखें बड़ी-बड़ी करके देख रहे थे. And he said he became like overly proud. तो बोले थे उनको थोड़ा सा अभिमान सा हो गया. And he was thinking, you fools and rascals, you dogs, hogs, camels, and asses. और वो सोच रहे थे जो बाहर के लोग हैं वो मूर्ख एकदम से गधा, सुअर, ऊंट, कुत्ते की तरह. And he said, but I'm in a limousine with a pure devotee. लेकिन मैं एक शुद्ध भक्त के साथ लिमोजीन कार में हूँ. And in that, he said, in that moment of pride, he just slowly turned his head and looked over at Srila Prabhupada. तो उस अभिमान के थोड़े से क्षण के दौरान ही फिर वो अपना मुंह पलट के श्री प्रभुपाद की ओर देखे. And he said, tears were pouring down from Prabhupada's eyes, looking at the condition of the conditioned souls. और वे बोले कि वे बताते हैं कि श्री प्रभुपाद की जो आंखें हैं उनसे अश्रु बह रहे थे कि जो बद्ध जीव हैं उनकी दुर्दशा देखकर श्री प्रभुपाद दुखी थे. And he said he felt like a bug. He just wanted to crawl under the seat of the car. और फिर वो अपने आप में बहुत तुच्छ कीट की तरह महसूस किया और सोचा कि काश ऐसा छोटा बन के कार की सीट नीचे घुस जाए. So this
Narada Muni, he is also one of our Guru Maharajas. तो नारद मुनि भी हमारे गुरु महाराज के ही समान है। He has nothing, he has no pride, he has no arrogance, he doesn't have anger, lust, or greed. तो उनमें कोई भी दंभ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ कुछ नहीं है। He is just spreading the glories of Radha Ramana all over the universe. वह पूरे ब्रह्मांड में इधर-उधर विचरण करके श्री राधा रमण का जो यश है उसको फैला रहे हैं। Narada Muni Bhajavina Radhika Ramana Namane. So this is the business of Narada Muni. तो नारद मुनि का यही व्यवसाय है। But here, he's looking at these two degraded fellows, and he is thinking, the only way I can help these two fellows is if I crush all their false ego. तो यहाँ पे इन दोनों जीवों की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इन लोगों का उत्थान इसी प्रकार से कर सकता हूँ कि इनके मिथ्या अहंकार को मैं भंग करूँ। So I will make them poverty stricken. तो इसके लिए मैं इनको दरिद्र बना देता हूँ। So we see in the history of the world, sometimes there are great empires that rise up and they become, like the Roman Empire was a great empire at one time. तो हम इस विश्व के इतिहास में देखते हैं कि कई बार बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य खड़े हो जाते हैं, जैसे कि रोमन एम्पायर। And then they became fallen. और फिर उसके बाद उनका पतन हो जाता है। The Greek Empire was like that also. The Persian Empire was also like that. ग्रीक और पर्शियन शासन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। And in more modern times, the French during the 19th century were quite a power. 19वीं सदी के दौरान फ्रेंच लोग भी काफी ज्यादा शासन में थे। But never in the whole history, world history, was there ever a greater power than the power of Bharatavarsha. लेकिन पूरे दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष से ज्यादा किसी के पास कोई शक्ति नहीं थी। They covered the entire planet Earth. That was their kingdom. तो भारतवर्ष पूरा पृथ्वी पे उसका साम्राज्य था। So in today's realm, that may not sit correctly with the analysis of the Western mind, which tends to write history. तो अभी आज के संदर्भ में देखें तो यदि हम पश्चिमी दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो यह ठीक-ठाक से समझ में नहीं आएगा। Even though the Vedas were written down 5,000 years ago, they have been spoken for millions and millions of years. यहाँ तक जो वेद हैं वो 5,000 वर्ष को लिखे गए हैं, उनमें भी लाखों पुराने सालों का वर्णन है। Krishna says this comes down in an unbroken chain of disciplic succession. कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है यह एक चलती हुई निरंतर बनी हुई गुरु परंपरा से आते हैं। So we do not see or learn by hearing mundane sound vibration. We don't listen to mundane sound vibration because mundane sound vibration has 4 defects. तो हम किसी भौतिक ज्ञान से कोई शिक्षा नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें 4 त्रुटियां होती हैं। In this world, everything is filled with mistakes. Everything is filled with illusion. Everything comes from imperfect senses. And then finally, there is a cheating propensity. तो ये जो 4 त्रुटियां हैं कि सब चीजों में हम देखते हैं कि वो उनमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं या फिर हमें कुछ भ्रम होता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम सब में धोखाधड़ी की प्रवृत्ति है। Therefore, we always, Krishna is our authority, and Krishna's pure devotees are delivering the same message. That is the beauty of Vaishnavism, is that the very same information
that you are learning today was also taught to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए और भगवान कृष्ण के माध्यम से जो शुद्ध भक्त ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सीखे थे वही हम आज भी शुद्ध भक्तों के माध्यम से सीख रहे हैं. Or was taught here on the banks of the Ganges with Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit. I love this picture because you see all these great sages have come from all over the universe, not just from this planet, from Siddhaloka, from Mahaloka, Tapaloka, Brahmaloka. And even we see Narada Muni here listening to Sukadeva Goswami. And even Srila Vyasadeva is here. तो यहाँ पे ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये मुझे बहुत ही पसंद है. यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा नदी के किनारे ज्ञान दे रहे हैं. तो इस सभा में पूरे ब्रह्मांड से अलग-अलग ब्रह्मांडों से भी सिद्ध लोग, तप लोग, जन लोग, अलग-अलग जगह से लोग आए थे. और आप देख सकते हैं यहाँ पे नारद मुनि, श्री व्यासदेव यहाँ पे स्वयं उपस्थित हैं. As a matter of fact, when I look out here, I think I see many of you also in this picture. व्यक्ति के रूप में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इस तस्वीर में हैं. Or you will be in this picture in the future. या फिर भविष्य में हो सकता है कि आप इस तस्वीर में रहें. That's Prabhupada's gift to us. यह श्री प्रभुपाद का हम सबके लिए तोहफा है. So, yesterday I was giving a lecture for the Sunday feast. कल मैं रविवार की भोज कक्षा में प्रवचन दे रहा था. I asked a question, which I'm going to ask the question again to all of you. मैं कल एक प्रश्न पूछा, मैं आज आपसे भी पूछ रहा हूँ. Who in this room has never suffered? आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई कष्ट नहीं झेला? Never suffered adhyatmic, adhibautic, or adhidaivik. कोई भी ऐसा जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश को नहीं झेला हो? Raise your hand if you have never suffered in this world. अपने हाथ उठाइए यदि आपको ऐसे कोई कष्ट नहीं झेलने पड़े. See, because you're honest people. आप सबके सब ईमानदार हैं. So one person said yesterday, oh, they never suffered in this world. Never suffered. कल एक व्यक्ति ने बोला नहीं मुझे कभी कोई कष्ट नहीं मिले. They looked like they were about 40 years old. I said, you've never suffered in this world. तो वो करीब 40 साल का दिख रहा था और मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं मिला? You haven't been in India during the summertime? क्या तुम कभी भारत में गर्मी के समय नहीं रहते? Right? You've never seen a typhoon or a storm or flooding? क्या तुमने कभी तूफान, बाढ़ या झंझावात नहीं देखे? You never had a relative that died? क्या तुम्हारा कोई ऐसा संबंधी नहीं था जिसकी मृत्यु हो गई? You have not suffered? No, have never suffered in this world. फिर भी वो कहता नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं मिला इस दुनिया में. It's funny. I said, well, what are you doing here then? Why are you here? You could go out and enjoy. तो फिर मैंने बोला कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाओ और मौज करो. And then, oddly enough, after the lecture, I was thinking of Prabhupada was giving a lecture in Australia, Melbourne, Australia. तो फिर प्रवचन के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक लेक्चर दे रहे थे. And Prabhupada was told the very same thing. और श्रील प्रभुपाद को भी ऐसा ही एक व्यक्ति ने बोला था. Madhavisa Swami said, Srila Prabhupada, this man here says that he has never suffered and he is not afraid of death. तो श्री मधुविश महाराज ने बताया कि यह व्यक्ति कह रहा है कि इसने कभी कोई कष्ट नहीं झेला, उसे मृत्यु से भय भी नहीं है. And Prabhupada shot back very quickly, then he's a madman. तो श्री प्रभुपाद बहुत जोर से चिल्लाए और बोले तब तो यह पागल आदमी है. So there's not much purpose in speaking to someone who is insane. तो
कोई व्यक्ति अगर पागल है तो उससे ज्यादा बात करने का मतलब नहीं है। Atata Brahma Jigyasa, this human form of life, is meant to inquire, why am I suffering? यह मानव जीवन है, यह हमें जिज्ञासा करने के लिए मिला है कि हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। But first of all, you have to realize that you are suffering. लेकिन इसके लिए पहले तो आपको इतना समझना ही पड़ेगा कि आप कष्ट पा रहे हैं। And then I thought today, I got up today and I started thinking how many times I suffered during the day. आज सुबह मैं उठा और मैं सोच रहा था कि एक दिन में बना मुझे कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। For example, I have, in the course of Kirtans, in the last 51 years, I've been in a lot of Kirtans. जैसे मान लीजिए पिछले 51 सालों की बात करें तो कीर्तन के दौरान Very ecstatic Kirtans. जब बहुत ही तेज कीर्तन करता हूँ, Sometimes a little bit crazy Kirtans. कभी-कभी थोड़ा उन्माद वाला भी रहता है कीर्तन। And the enthusiasm of other devotees in the course of a kirtan has caused injury to me on many occasions. तो ऐसा कई अवसरों पर हुआ है कि जो भक्त रहते हैं कीर्तन में उपस्थित, उनका जो उत्साह है उससे मुझे कुछ क्षति पहुंच जाती है। As a matter of fact, at least 4 times people have stomped on my foot and broken my toes. तो कभी-कभी कम से कम 4 बार लोग मेरे पैर पर उछलते कूदते हैं और करीब मेरा पैर की उंगली है उसको टूट गई। And I've actually had to have surgery done on my foot. They had to. One toe was so deformed from getting stomped on all the time. They had to do an operation and cut off all this cartilage. तो एक बार मेरा एक अंगूठा इतना ज़्यादा उसको चोट पहुंच गई, लोगों के कूदने से भी उसका ऑपरेशन सर्जरी भी करानी पड़ी। So every day I get up, first and I go to stand up, I feel the surgery, and then I have the tip of one of my toes. Every step I take is like a pin is stuck in it. तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कि जो मेरा पैर है वो ठीक से काम कर रहा है और जब भी मैं हर एक कदम चलता हूँ तो उसमें थोड़ा चुभन सी होती है। So I'm thinking, wow, that person never suffered in their life, and every day I get up, the first step I take, I'm suffering. तो मैं सोच रहा था कि वह व्यक्ति उसने कभी कोई कष्ट नहीं झेला, लेकिन मैं तो हर एक कदम चलता हूँ तो मुझे थोड़ा कष्ट ही दिखता है। So who is more fortunate? The person who thinks they've never suffered, or Udayananda, who's had his feet smashed at least 4 times, broken my toes? तो कौन ज़्यादा सौभाग्यशाली है? वह व्यक्ति जिसने कभी कोई कष्ट नहीं झेला या फिर मैं जिसका करीब-करीब 4 बार पैर टूटते हुए बचा। So then I started thinking, wow, thank you, Krishna, for getting my toes smashed. तो उसके बाद मैंने सोचा बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान कृष्ण को कि मेरे जो अंगूठे उसने चोट आई। Because then the reality, you can't live in the illusion that there isn't Adhyatmic, Adhibautic, Adhidaivic. तो क्योंकि यही वास्तविकता है, आप भ्रम में नहीं रह सकते कि कोई भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश नहीं है। Jeev Jago, Jeev Jago, Jeev Jago, Bhakti Vinod Thakur. Wake up, sleeping soul. Wake up. And a couple of you just woke up as I said that. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हे सोतीले आत्मा जल जाओ ऐसा बोलते हैं कुछ जल के। Hare Krishna. This is their mercy. Prem Bhakti Prabhuji had that beautiful song of Bhakti Vinod Thakur on his class that he gave. It was incredible how it lined up perfectly with the purport. तो श्रीपद प्रेम भक्ति को जब श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से क्लास दिया था। Right. The ultimate conclusion of everybody is that it either becomes your body turns into worms, it turns into stool, or it turns into ashes. That goes for
everyone on the planet Earth. तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनका शरीर कीट मल या राख में परिवर्तित हो जाता है. That's why Narada Muni is saying these boys who are the sons of Kuvera, they would make Elon Musk look like a poor man. तो ये जो नारद मुनि हैं वो एक बड़े बिल्कुल श्राप दे रहे हैं कि उसी प्रकार से जैसे इलन मस्क को भी दरिद्र बना दिया जाए. And so handsome too, and Elon Musk is ugly, so we know he can't. They were very, very handsome, very, very handsome. और वे बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थे. And the mercy of Narada Muni, he took everything away. और नारद मुनि की कृपा की उनसे उनका सारा सौंदर्य ऐश्वर्य ले लिया. But there's a caveat. There is there's some benefit. लेकिन इसका एक फायदा भी है. And that is, after their suffering, they would be able to be liberated by the Supreme Personality of Godhead and see Krishna face to face. कि जब वे मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद जब शाप को उनका पूरा होगा तो मुक्ति प्राप्त करेंगे स्वयं भगवान के हाथ. Every day we have so many seconds in our life. प्रतिदिन हमारे पास दिन में कई सेकंड क्षण होते हैं. Those seconds are either invested in Krishna or in illusion. तो यह जो हमारा समय है या तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं नहीं तो फिर माया की सेवा करते हैं. Just like these men walking out the door, they're walking out of the Bhagavatam class. जैसे लोग जो लोग अभी कक्षा के बाहर मंदिर में बाहर चल रहे हैं वो भागवत क्लास के बाहर जा रहे हैं. And then I see these men sitting in the Bhagavatam class. और मैं इन लोगों को देखता हूँ जो भागवत कक्षा में बैठे हैं. You see how amazing Krishna is? आप देख सकते हैं कृष्ण कितने अद्भुत हैं. Every single living entity, everyone sitting here, everyone walking around this building, everyone is perfectly in their situation based upon their desire and their deserts. तो ये भगवान कृष्ण का ऐसा आयोजन है कि हर एक जीव जो इस मंदिर में अंदर है बाहर है कहीं भी है वह अपनी इच्छा और उसका जितना उसका जो योग्यता है उसके अनुसार अपनी स्थिति में है. And like I was watching yesterday, it was a beautiful, I love your Sunday Feast program. I love the Sunday Feast program here. जैसे कि कल हो रहा था मैं बताऊं तो मुझे आपका रविवारी भी भोजन कक्षा बहुत ही पसंद है. You see the full range of consciousness. You see, the brahmacharis who are preaching, and then you see new bhaktas that are coming, and then someone who's come for the first, you can see their wide eye like, wow, what's going on here? It's quite amazing. तो उस कक्षा में हर एक चेतना वाले लोग थे, ब्रह्मचारी भी थे, नए भक्त भी थे और जो पहली बार आए थे जो बड़ी-बड़ी आंखों से देख रहे थे वो सब थे. And the same message is being delivered by whoever is preaching at the time. और वही संदेश जो भी प्रचार करता है व्यक्ति उसके माध्यम से वहां दिया जा रहा है. So people are taking it into they're assimilating it, and they're thinking, I'm going to change my life with this. I'm going to change my life with this. और लोग उस ज्ञान को ग्रहण करके यह विचार करते हैं कि मैं इस ज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलूंगा. And then someone else is thinking, I wonder when they're going to serve the food. और इसी समय पे ये भी सोचता है कि भला प्रसाद कब मिलेगा. So, and then someone just leaves and doesn't even take the prasadam. कुछ लोग तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं प्रसाद नहीं मिलेगा. Very unfortunate to watch everyone's individual karma happen. तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्म में देखे. But Krishna says, Samoham sarva bhuteshu name dveshasi na priya ye bhajanti tu mambhakya mayi chiteshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I'm equal to everyone. But if one offers me in love
in devotional service, he is in me. He is in me. It's really a beautiful, I can't remember the Gita's last word. I am in him, and he is also a friend to me. I'm missing one of the lines, but the point is that Krishna is giving all of us an equal opportunity. No one's getting a little bit more. No one's getting a little bit less. It's just how much will you take advantage of that opportunity? You take advantage, seize the moment, become that or not. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मैं सारे जीवों के प्रति समान हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता हूं, कोई मेरा विशेष रूप से प्रिय नहीं है, लेकिन जो प्रिय पूर्वक मेरी सेवा करते हैं मैं उनका हूं और वे मुझ में हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण सभी को समान अवसर देते हैं, तो किसी को कुछ कम अवसर नहीं देते, किसी को ज्यादा नहीं। तो चुनाव हमारा है कि हम उस मौके का फायदा उठा के उसका सदुपयोग करें। So today could be the day we totally surrender to Krishna. तो आज वह दिन हो सकता है कि जब हम आज भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। Because no one knows when is the last day of your life. क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है। No one knows. So one should live his life like this is the last day of my life. What would you do if this was the last day of your life? तो हमें अपनी जिंदगी इस प्रकार से जीना चाहिए कि जैसे आज ये हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा आखिरी क्षण है, तो आप किस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे? Krishna says, learn the truth from the bona fide spiritual master. Pariprashnena sevaya. Inquire from him submissively, render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you, for he has seen the truth. तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रामाणिक गुरु से उनकी सेवा करके, उनसे विनम्रता से जिज्ञासा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि ये तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, इसलिए वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। How many people are initiated by Bhakti Charu Swami? Here, raise your hand. यहाँ पे कितने लोग श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज Raise से it. शिक्षा प्राप्त की हैं? Hare Krishna. Okay, keep your hands up. How many of you met Bhakti Charu Swami? और आपने हाथ ऊपर करिए और कितने लोग श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से मिले भी हैं? How many of you have seen Bhakti Charu Swami's video? कितने लोगों ने गुरु महाराज के वीडियो भी देखे हैं? Okay. And how many of you seen Prabhupada's video? और कितने लोगों ने श्रील प्रभुपाद के वीडियो देखे हैं? Okay. So, you know, we're so very fortunate to have met a pure devotee of Krishna. तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम शुद्ध भक्त से मिलते हैं। It is no ordinary thing to meet a pure devotee of Krishna. तो भगवान के शुद्ध भक्त से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। And those who got a chance to associate with Bhakti Charu Swami over the years, Krishna Kishore every day for 4 years, knows what a transcendental personality he was, right? जिन्हें भी गुरु महाराज का व्यक्तिगत संग मिला, जैसे कृष्ण किशोर प्रभु पूरा 4 साल तक प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से संग करते थे, तो जानते हैं कि वो किस प्रकार के दिव्य व्यक्तित्व वाले थे। We met that person. We associated with that person. And we saw that person, even if it's just on the video, you saw that person. That person really lived. तो हम उन व्यक्ति को देखें, यदि हम उनको सिर्फ वीडियो में ही देखें, तो हमें इतना तो ज्ञान है कि वे किसी पृथ्वी पर थे। Sometimes they question, were these people really alive? Were there really a Sukadeva Goswami? Was there really freaking Maharaja? तो कभी-कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति तो वास्तव में थे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ये सच में थे? Not only is the answer is yes, but we met such people. We met such a person as this. So I also met Srila Prabhupada. So sometimes people talk, well, are you exaggerating? No.
Never, no. He was exactly, he existed. Just like Bhakti Charu Swami existed. Now people, yesterday, I asked the crowd, how many people met Bhakti Charu Swami? 15 people. That's like, that almost like makes my brain explode. तो कभी-कभी लोग हमसे बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसे जीव हुए थे, ऐसे शुद्ध भक्त भी रहते हैं। कल कक्षा के दौरान मैंने पूछा कि कितने लोग गुरु महाराज से मिले हैं, तो करीब सिर्फ 15 लोग मिले थे। तो इससे मेरा जो मन है, दिमाग फट सा गया। When I first came to Ujjain, this place here, it was just dirt. All of this was the manifestation of his love for Srila Prabhupada and for Radha Madan Mohan and for Chaitanya Mahaprabhu. तो यहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी प्रकट किया वहाँ उनका श्री राधा मदन मोहन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का प्रदर्शन है। So we met him, just as we met him, we can meet all these. These people are, he is with all these people now. He's with them. And you can be with them too. जैसे कि हम उनसे मिले, वैसे हम इन लोगों से भी मिल सकते हैं और वे अभी उन्हीं लोगों के साथ हैं और आप भी वहाँ पर लोगों के पास जा सकते हैं। And not only am I requesting you to be with them, I'm requesting you to become like them. You become just like them. और मैं आपसे इतना ही निवेदन नहीं कर रहा हूँ कि आप भी उन लोगों के पास आइए, उनका संग प्राप्त करिए, बल्कि मैं यह भी कहूँगा कि आप भी उनमें से ही एक व्यक्ति बनिए। Because I see the devotees that are, the quality of the devotees in this yatra. They're Paka first class. क्योंकि मैं यहाँ पे जो भक्त हैं उनकी मैं गुणवत्ता देख रहा हूँ, ये प्रथम श्रेणी के पक्के भक्त हैं। So if you want to honor your Guru Maharaj, you become like your Guru Maharaj. यदि आप अपने गुरु महाराज का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने गुरु महाराज के जैसे बनिए। You will save yourself and you will save the world. इससे आप अपनी तथा पूरे संसार, इससे आप सबको बचा सकेंगे। Hare Krishna. Is there any questions, comments? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, His Divine Grace Bhakti Charu Swami Guru Maharaj ki, Gaur Premanandi.